हमने अगली चेंज करी. Thank you. Thank you very much, sir. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Conference Series at 2029 milestone. I'm really grateful to Dr. Amarjit Singh Bhamra ji, Dr. Avatar Singh ji, Dr. Ajit ji, Dr. Swaranpuri ji will also join, Dr. Venkat, Dr. Shekhar, Dr. Amit Guman ji had joined, Dr. Raghu will also join at the time, Dr. Sekat Kumar Vasuji, Professor T.R. Shantala Priyadarshani, and Dr. Vijay will send us the video recorded. So thank you very much for joining. Today we are celebrating NRI Day. And as we are related to Ayurveda, AYUSH, we are focusing every time on our Ayu or Ayurveda or AYUSH. So thank you very much for joining us. I would like to request Agnihotri sir for brief welcome, and then we will call Bhamra sir. Really, thank you, Agnihotri. Professor Paumshavaji. Really, it's our great pleasure that our international team, in a form of our well-wishers, our great persons dealing with Ayush, Ayurveda as such, beyond the geographical boundaries of our country. It's a really great pleasure to us, and in this way, Ayurveda is serving a lot to the suffering humanity with the golden hands of these NRI guest speakers, those who are here and ornamented this platform. So having such a galaxy of our guest speakers here, including our very revered Dr. Vaidya Amarjit Bhamra sir, our Amit Ganwan sir man is also here, and all the previous guest speakers, along with our platform distinguished guys, they will also remain with us with the to enhance our pleasure and also our happiness to be here to celebrate the NRA Day. So all the guest speakers from foreign countries dealing with our ages-old pathy Ayurveda are going to share their experiences and also the possibilities of the establishment and development of this as well as Ayurveda pathy globally, which they are making all efforts for a couple of decades residing there in their countries. Madam Santalaji will also be here from Latvia. And what I'm feeling, we are feeling much more fortunate to have great blessings from all of you having their places in their country. Of course, remembering India, our nation, our national flag, of course, I've got no doubt to say our pathy, not less than a national pathy when we talk in reference to the Ayurveda. So with these words, I welcome again and again to all my senior brothers and our well-wishers and working a lot for the Ayurveda, along with our all Indian citizens, those who are here, and blessing this platform. Thank you so much, and over to Professor Paumshamaji. Namaskar. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Dr. Amarjit Singh Bhamra sir, very renowned personality in UK. In Ayurveda or Ayush, everything is incomplete without Dr. Amarjit sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Swagatam. Can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, sir. So, you say what you say about me, but I am still birth ki charno ki toor hai, sir. So, I just want to share my little controversial thoughts with you on this subject, and I hope you and the panel will accept them and something to think through. So, the Ministry of External Affairs
of the Bharatiya Janata Party back in 2003 inaugurated the Parvasi Bharatiya Divas, PBD as it's known. And this was a project of our late beloved Indian Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji. And the idea was that they wanted to create a platform for recognizing and engaging with the Indian diaspora, people of Indian origin living abroad. And then they selected the date of 9th of January, which is today, and to celebrate this. And the date was selected purely because Mohandas Gandhi came back to India from South Africa on this date in 1915. So that is why, this date is being celebrated, for this NRI program. So that's really my sort of background, to some humble suggestions that I would like to share with you. And that is that I have never had the opportunity to come to India and visit, the PBD. This is in its 14th year, and I think it started today in I think it's Bhubaneswar. It started today, it's all the rich and the famous are there. So from my knowledge, Dr. Sharma ji, that we have from the United Kingdom people who are either very rich or people who are extremely well-known celebrities who are invited to these programs. And I think they get some sort of a certificate and stuff like that. But the real issue is normal people like you and me who are working hard, who are paying, for their mortgage and for their rent and their electricity bills and all their costings here. At the same time, they want to see if there is something that they can do back home, whether that's Punjab, Gujarat, or Maharashtra, whichever state, people are here. And this is where the problem is. And I hope that, with your great platform, that we are speaking on today, we'll find a solution to this. And the situation is that there is too much red tape in India. There's too much corruption in India. And जब हम लोग इंडिया में वापस जाते हैं, जितना चिर हमारी जेब में पैसे होते हैं, उतना चिर ठीक है. And when you have no money, that's it, finished. This is a reality. I have some very good friends, over the years, and we we actually came to a decision some 20 years ago that we created something that's called the NRI Talent Bank. So we have access, Professor Agnihotri ji, to nearly 500,000 people of Indian origin, non-resident Indians who are living in North America, that's in the United States and Canada and Europe. So these are all professional people. So we have access to 500,000 people who would, at some stage, would have liked to taken, some sort of dip into investing in their motherland. But, from some very prime examples, that we've seen, in our own community here, I mean, even from London, some of my very good friends have gone back to India. They've gone to Punjab, they've gone to Delhi. If you are politically very well connected, you might get licensed to do something, and that's about it. But not many people have gone all the way. They have burnt their fingers with India, and they've had no choice but to come back. That's the reality. So there might be, 1%, 2% people who got through
purely because of luck or some very high-profile contacts. And so this is a matter, on one hand, we want to celebrate, this NRI Day, which is basically, I think, looking at the Indian diaspora and how well they have established themselves overseas and how well they are doing, and we are very prominent here. But in real terms, what is it that we are doing for our motherland? Nothing. Nothing is happening. So you have various chief ministers, who come from India, and they lure some NRIs who are very close to them, and for some investment projects. But there has to be not a state by state situation. It has to be a universal India platform, and that really, I think we had suggested some time back that the government of India, like there used to be the Ministry of Health, and then some years ago, then a Department of AYUSH was created, and then now there is a Ministry of AYUSH. There should be some ministry, for NRIs. There should be some mechanism where government officers, who are not bribed, can actually work with the real situation here. And there is so much talent, there is so much resource, there is so much finance that the Indian overseas community holds. We could create India into second Switzerland. And that unfortunately isn't happening. And many politicians are coming here from India, many other, people from various regional governments, and they say, "Hamari state ye kar rahi hai, hum wo kar rahe hai." But in real terms, nothing is happening. And I've been involved with the NRI community for many, many, many years, and we don't have like really any success story, other than people who have there are people who have even, they're so optimistic to go back to Bharat. They sold everything, they've gone back, but they have come back to nothing because वहाँ उनको कोई बात नहीं सुनता है. So I'm very glad that the government of India has set up this initiative, to celebrate NRI Day, but they need to seriously think that they want to keep this for the high and mighty, people who have got very deep pockets, or they want to really, open the threshold and give a normal, my dear friend, Dr. Avtar is here. He was very instrumental in bringing out preventative medication, curative medication, during the Corona times. And he was looking for the opportunity to actually establish, a unit, where somebody could actually help him they can take his know-how and his formulas and actually start, building this. But there is nothing coming, from the government, nothing coming from the state government, and nothing coming from Ayurveda organizations, that there are in India. So I think there has to be like a real-time thinking, that has to go behind, the government to think, okay, there are, in England, for example, there are nearly 4 million non-resident Indians. And because of the political climate, and in India, not everywhere, we have, Ambanis and Tatas and Birlas in India. And so therefore, what facility, what opportunities are we going to give to these people so they can come in a stress-free environment and they can set up their businesses? And the other thing I want to recommend, Dr. Sharma ji, is that we should be, all of us on this panel here, should be thinking about actually setting up an Ayush village
somewhere, a pilot project somewhere in India, where a lot of non-resident Indian people can go for Ayurveda treatments. It will benefit the country, India. It will be and there are many people here. There are many people who don't, who actually go to some private institutions, whether they have, the right clinical approach apart from being a financial institute, because they're there to make money. I'm not saying that we shouldn't make money, but the Indian government need to grasp this opportunity because there's a huge potential for NRIs to invest and to come back and to have treatments and to get better in their motherland. So this is something I think that, this particular platform, Professor Agnihotriji and Professor Sharmaji seriously consider this. There are many countries now, who started so late with Ayurveda, and they are promoting, in their countries as a holistic destination for medical and well-being holidays. Sri Lanka is now starting to do that again. Mauritius is doing that. Dubai has started doing that. And India is such a huge ocean. You go to North India, you go to East India, you go to West India, you go to South India. South India is there's so much opportunity. So there has to be some lead. I think somebody has to take a lead, to look at, and looking at this, through the work, for example, that we are doing here to create a pluralistic medical system. We're not saying, although we are born and work holistically with Ayurveda, and obviously we believe in this because this Ayurveda is our dharma. But we are living in a country where some people think Ayurveda is the name of a pizza. No. So we have to work, with the institutions here, and we have to take the high moral ground to say to them that we are offering our hand of friendship. We are, traditional practitioners of Ayurveda medicine, and here is an opportunity. We need to create an opportunity to work together. And you will be very pleased to know that in October last year, the All-Party Parliamentary Group on Indian Traditional Sciences, we conducted a very beautiful meeting here. It was a 2-day program at the oldest Sikh Gurdwara in London. The oldest Sikh Gurdwara in London was created in 1908. And we had a 2-day marvelous program, and we had the whole contribution, were people from the National Health Service. So I didn't really invite really many Ayurveda physicians, only maybe 2, 3. But that was the whole idea was that, and we had invited from our great mother country, we had invited Dr. Bhushan Patwardhanji. We had invited Dr. Professor Darshan Shankarji from the TDU. And then we had invited also Dr. Uni Krishnanji from TDU. These are the key people in Hindustan who are an authority on policy making and Ayurveda. So they were here with us, for 3-4 days. And we are now, preparing what is called a white paper, to be submitted to the British government, and to see, how we how we can look at integrative medicine and take Ayurveda into our National Health Service. And where is Dr. Sharmaji? I can't see you anymore. Dr. Sharmaji? Can't hear you. Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. you will be very pleased to know that, this is the beginning of the new year, that through your blessings of this, Professor Agnihotriji and Dr. Sharmaji, and this wonderful platform that you created. So now we are at that crossroad where
The UK National Health Service is accepting yoga. That is absolutely milestone, because here we are, we have been fighting, for the last 10 years, that. 10 years we're fighting for the recognition and the legitimization of Indian traditional sciences. So, that's where we are at the moment. And so we would be very happy to conduct further opportunities and look at ways of how we can target the NRI community here in the UK and also in the Europe, because we're also working very hard in Europe. We have many programs in the European Union Parliament. So I would be very keen to develop, although this is not directly anymore, my work, because all my time is taken, with the policy making with the British government and the European government. But I would be happy to suggest this to you and to work, with some sort of an association where we can actually, build up some great understanding. What does India have? What does Ayurveda India have to offer to the non-resident Indian community for their health and well-being? So I think I have given some of my thoughts. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts with you. And of course, the other thing is, and I would say that, and that is because there are far too many days and coins and notes and rupees you have with Mohandas Gandhi's picture. Too much information. What the Indian government, what it should have considered, yes, is that the real non-resident Indians are the original independence fighters, people who fought for Mother India, who were taken away from Mother India by force to places like Kalapani and Yemen and drowned and killed. And those are the people we need to remember today. Those are the people we need to pay our homage. And those are the people we need to remember that never had the opportunity to come back to their motherland because they died for the motherland. So there has to be one particular program, like this NRI Day that, you've created in India. Some new leadership has to come in and to take that concept. Otherwise, all the work that our forefathers did for us to be sitting here today and listening to each other would not have happened if they had not sacrificed. They died for India. It wasn't a question of option. There was no option. And they did that, they did that from their brave heart. They lined up. Because they wanted to put what is our Hindi word for shaheed? Because I don't like to use the word shaheed because it's an Islamic word. You got Balidan. Balidan. Wo jere Balidan, they lined up one after one after one after one to attain independence. And those are the people, those are the real non-resident Indians who did, what we can't do. All of us on this platform cannot do. Yeah, and they did this this remarkable work, and who were never allowed to come back to India. People like me and some of my other friends here, we can get a ticket, 800, 900 pounds and come to India and go to Delhi, go to Kolkata, do this and do that and come back. But those are the real people. Yes, sir. So the NRI Day should be in the service and in the memory of those forgotten heroes, those eternal forgotten heroes. So thank you for giving me this opportunity, having said what I have, and I hope that, we can stay in touch and that Sharma-ji can carry on progressing, with wonderful programs like this, but something has to come out of these programs. Thank you so much, Sharma-ji. Thank you so much.
Thank you very much, sir. So nice for your blessing. Thank you very much. अमित जी, केवल हमारे दो बुजुर्ग बचे हैं पहले, और मैं भी उनमें से क्षमा चाहता हूं अजीत सर से कि वो सुबह 5 बजे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यदि वो Wow. ऑस्ट्रेलिया में है तो वो रात के 3 बजे जुड़े हुए हैं, और यदि वो न्यूजीलैंड में है तो सुबह 5 बजे जुड़े हुए हैं। आई सैल्यूट अजीत सर, रियली ग्रेट। तो मैं अवतार सर और अजीत सर के बाद, अजीत सर और अवतार सर के बाद अमित जी को इनवाइट करूंगा। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अजीत सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, फाउंडर ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वेलकम सर, डॉक्टर अजीत सर। You are mute, sir. Please unmute. Yeah. Thank you, Sharmaji. And first of all, my greetings to all of you, especially to see Amarjit ji after a long time, right? Sasikal ji. And to Dr. Avatar and Agnihotri ji, who are, I think if we talk about this platform from where Pavanji leading the way to spread message of Ayurveda, because we are associated with Ayurveda. Now, today, you have picked up a subject which is very vast when we talk about NRI days, right? So, in relation to NRI days, we need to look at NRI relate means to the people who are from India or Indian background are out in the world in various countries. But then what they are doing there, how they are establishing, each field will have a different parameters and different aspects when we talk about the success and what is being done. But here, as we all are associated with Ayurveda, we need to talk about what is the aspect of people who somehow have come out of India and try to establish in their field. With full respect to everyone, not every Ayurvedic doctor, means when I say Ayurvedic doctors, I'm talking about the basic BMS graduates who come to the various countries, whether USA or England or New Zealand or Australia or anywhere, that what exactly they do, right? And 90% of them are not in Ayurvedic practice. They have established their different businesses and doing great in that. So that is, for them, that is their mantra of success, yes. Because again, as Bharmaji mentioned, monetary aspect is a one parameter of the success. But then if we looking at from the Vedic philosophy or Ayurvedic philosophy where we are associated, that what we have done, then I will say that whoever in whatever country, I can assure you, everyone has struggled. Struggle in the sense is because, as Bharmaji just said very simple way, that 99% public in these countries does not know what is Ayurveda is. Many think that I'm selling a pizza or something that fish and chips or other things. They don't understand. Yes, yoga has done to some extent a lot to the Vedic philosophy because that's where, but then key is, again, what Bharmaji mentioned, that where is the follow-up aspect? I know Indian government has so much to do. They are not just only going to focus on Ayurveda and yoga, but then they have created different departments, and that's where now we talk about the AYUSH ministry, and they are having now so much big budget, which in our own time, I'm now for the last 30 years here, and
Then I have worked with the government of India for 20 years before moving to these countries. So we have seen what was Ayurveda in that time, in 1977 and that time, and when we taken admission in 1971. So no one knows about Ayurveda. And if we're talking about the struggle of Ayurveda, I can vouch that I have spent 1 month in jail in Chandigarh, Bdal jail, if someone are associated with the northern India, because of the struggle of Ayurveda. I was in a final year student and we fought for Ayurvedic recognition because no one knows about Ayurveda at that time, and we were fighting for the recognition alongside with the medical doctors in regard to the monetary aspect, because at that time no one used to have the same pay scales or like that, which is again was the difference. So we done that struggle nationwide, and 1 month we spent in Bdal jail. So everyone has done their part. So coming back to the Western countries now, if we talk about the success of NRI and then talk about the success of Ayurveda and yoga, each individual has tried to do in their own ways. So that's an individual success. And that I don't think matter a lot, nothing. We need to look at that, okay, where the success of this modality, of this science, which is our base part with us for 5,000 years, what is actually happening to that and how it can be safeguarded. If we're talking about yoga, yoga is now at an international day, right? But then look at what yoga is being practiced in the Western world. Someone has made it a rock yoga, someone made has a naked yoga, someone made it in a different ways of yoga. Everyone is trying to do their own part. I know national government or those, whenever we try to talk to them, recently we have just finished 10th Ayurveda International Congress in Dehradun. Point is, they do all the time international delegations, meetings and all that part. What exactly get done? Each international delegate is asked to talk about their country for 5 minutes, right? When you are coming from Australia and New Zealand and spending so much money to go for their 3 days, we are not going there to eat good food, right? But idea is to look at the outcomes, what can happen. Because we are going there, reason is we have that passion for Ayurveda and yoga in the heart. And we feel something should be done for the coming generation. That is what we are bringing up. But then how that can happen? If it does not work and then given 5 minutes and speak about there and then shake hand with 100 people, that is not where things are going to go. Slowly, and I'm with full respect to everyone, I'm very clearly saying, based on this bigger universal thoughts, that people are desperately looking for some kind of that approach which can empower them for their well-being. And that is where somehow Ayurveda is getting a little bit popular in the different countries. But then they have their own ways of success. Somewhere you are able to run in a 1-month course and become an Ayurvedic practitioner. Then focus in Ayush is only to sell the herbs. They only talk about the herbs, but then again, there is no standards, right? Nothing has worked. For the last 30 years, I have been fighting with the Ayush that somehow we should stop the selling of Ayurvedic herbs in grocery shops. And I'm not against grocery shop people. They have their own monetary benefit. They sell those parts. Reason is
because all the products are picked up from the local Indian market, which has not been tested for heavy metal. And this is one thing whole my life has gone, and I'm sure all the associated Ayurvedic practitioners might have also seen the same struggle, that whenever we try to discuss with medical doctors or at different platform, they shut us in a very simple way that Ayurvedic medicines are not safe, Ayurvedic products are not safe. And that is the one big hurdle we get. And then time to time, there will be raids on these shops. Those herbs will be picked up. Then they get tested in different local labs. And when they found that it has a heavy metal, because again, in India is a huge country. You can't even imagine, these Western world people can't even imagine that how big India is. And in the same way, when we talk about Ayurvedic pharmacies and other things, there are thousands and thousands of those pharmacies. And then their standard, again, I'm a very passionate Indian, right? But our moral is the one thing which is totally dead, always. Our focus is only to make money, whatever way we want to make the money. And then these adulterations and other factors comes up. And coming back to the Ayurveda, because I won't touch any other science or anything, because I'm not capable of. So when we're talking about Ayurveda, in Ayurveda, we get all the products and other things with this heavy metal part. But heavy metal is only because of the standardization. So my question is coming up, if somehow this Ayush department even take this step that, look, standardizations of the Ayurvedic products need to be worked out, right? Then second thing comes up is the struggle of standardizations of the practices, because there is no research. And now when we talk about the research of the herbs, right? Because again, in Western world now, these Ayurvedic herbs are becoming more and more acceptable, because this thing of the COVID has made a multifold awareness of the herbs now, whether we talk about Ganduchi or Ashwagandha or Brahmi or Punanarva or whatever, or Kalmeg and other things. So the research part is the biggest one, because when we talk about the research, those researches are again done in the labs on the animals and other things. That part is also not getting very clear, that how come a research done in the lab on the mice and on the rats and the cats and other can be used on human beings, because it means we are basic aspect of Ayurveda not able to understand. Ayurveda relate with mind and body. Body is a physical part, secondary. Whereas in Ayurveda, we always talk about, and that is the strength of Ayurveda, the mind part. But how come the herb which is being tested on animals can be given the proof that yes, this can be related with the human being? Because in human being, that psychosomatic component is the one which is impacting your physical brain also. So I'm not going to go into these things, because this is a big subject. So where the success part we are talking about, the mantra of success of the people, NRIs related with Ayurveda and yoga, for them, the sport is not for personal gain. We are not asking them to give us the funding to survive. No, that's not my appeal here from this platform. My appeal is that Ayush people must awake. They have now millions of dollars of the funding which has been given by national government because of the Modi ji's. Honorable Modi ji is totally dedicated. I'm not again going to talk about on the political aspect where whatever government is there. I'm talking about his personal interest and the associate other
ministers or people who are in the ministry, they have somehow some kind of heart for yoga and Ayurveda. So they need to look at how much big budget is coming up there. Apart from just trying to fill their own coffers is not a good thing. That money should be structurally spent to the different, having an Ayush chairs in different countries is of no use. What that is going to do? That is not the success parameter. That Ayush chairs are coming up, that person stay here for 2 years, they don't even know and understand that what are the difficulties, what are the things need to be done, right? It's all about, I will give you one example. I'm sure some associated with the other countries can also see the part. In Australia and New Zealand, people, when they get some kind of injuries, back injuries, shoulder injuries or other, they go to the national health system and they can get some kind of assistant, what we call them, free visit to the physiotherapist or other for getting some manipulation, whether chiropractor, osteopath or acupuncture, those kind of thing. In New Zealand and Australia, we call it as ACC, Accidental Compensation Corporation. So that's the department. So where you will be off the work and then government give you some kind of help to get the treatment done so you can come back to the work. And when we put our cases for Ayurveda with our Ayurvedic musculoskeletal treatment, which we call as Kati Basti special treatment, which has a multi-fold better outcome than the physiotherapy. But people don't come to those treatment. Reason is they have to pay from their own pocket. Whereas when they visit to the Chinese practitioner or to a physiotherapist, they don't pay anything and they keep visiting them weekly, fortnightly, even though they were getting better or not. But at least no one spending money from their own pocket. So when we put our cases to them, government never looked into. Reason is our own government never spoke. I take it to the High Commissioner. Many High Commissioner has come in 30 years now in Australia and New Zealand. And to everyone, when I was young, because of this, all my association with the government of India and whole life, we have struggled for Ayurveda and keep fighting. And the reason is I'm not going to bring my own personal thing. In my blood, my father was in the INA. He spent his life in jail in Malaya in this Kalapani aspect, what we just Bhumraji mentioned. He spent his life fighting with the Subhash Chandra Bose ji. So that is the blood I am carrying, but I'm talking not personal here. I'm talking about the NRI's aspect, and these are the struggles we all are facing. So, and when you bring it to the High Commissioner or like that, they don't even know about Ayurveda. Now, because of their compulsion of national government and Modi ji's danda, if we talk about talking on Ayurveda and yoga, yes, they have started understanding, but no one does that. What we ask them, that if they can talk to the health ministry and tell them that this Ayurveda should also be recognized and accepted for these treatment, that is what the part is. So as far as the success of Ayurveda and yoga in these countries, it is not for personal success. We need to look at within a bigger picture that in coming 10 years and 15 years, what will happen? If our objective is only to sell herbs, then perfect. That's perfectly fine. You can keep selling. That is a multi-billion dollars industry. It is coming up. But then question is it giving you that satisfaction? Who is present in this platform and who is present in our billion population in India or in the world? Who is going to take all these $1 billion which we are accumulating with them to the end result? No one has gone from this world with anything accumulating at the end.
Again, Bharmaji mentioned few names which are being remembered who have given Balidan to the country, because at that time it was required to make the country free because we were slave. Today, the time is that we have to look for that Balidan which can safeguard Ayurveda and yoga in somehow, so that our coming generation can breathe in freedom and breathe in that confidence, that pride that I am associated with Ayurveda. Today we are pride that I am an Indian only because of their Balidan who have done that. Otherwise, we would still be the slaves of these people. Same is with the yoga and Ayurveda. If we can today really do something in all honesty for Ayurveda and yoga, not for personal gain, but looking at that 20 years, 30 years ahead, that coming generations, what they will look at, that is the part. And for that, two aspects are there. Standardizations of the treatment program, because Ayurveda is a holistic science. And that is where we always have to respect medical system. You cannot question that. Those people who say that I hate medical system, I request them all the time from different platform that you cannot say that. Medical system has its own role. Medical doctors, medical surgeons and other, they have their own role, right? But what is not happening there is that the gaps which are leading and the public need to be educated, and that's where Ayurveda and yoga comes up, that awareness and all that part. So that's the line of the treatment. And then the product part. For most important is how we can standardize and safeguard the products. And one another example, 2 minutes I will take it. All our shastras, all our herbologies, granthas and books and other things we talk about the dosages of the Ayurvedic herbs, that, okay, Brahmi will work when you are using it 1.5 gram to 3 gram or 3 to 6 gram in the powder form. Same is with the ashwagandha, same is with the kalmeg, punanarva and everyone. And pick up any product. I'm talking about any product from Indian companies, and I'm talking about the thousands of companies. Every company will have the product, what we call as therapeutic formulation, and they might have 4 or 6 herbs, and they are using 30 milligram, 250 milligram, and 125 milligram as a single ingredient dose, right? And then prescribing it that you should be taking it twice a day. Then how come the dosages given in our traditional text are talking about the 3 gram to 6 gram or 2 gram to 4 gram? And now all the researches which are coming up in the medical researches I'm talking about on the herbs, pick up the ashwagandha, pick up the Brahmi, which are becoming a household part. They again are the research coming up that if you want to use ashwagandha, you have to use minimum dose 1.5 gram as a single dose to get the benefit of that. And pick up even a one product. My request is to everyone in this platform, very open. I'm happy to have any discussion. Show me one product, and this is with humble request. Show me one product from Indian whole market, billions products are there, where they are using this level of the dosages in the product. If we are not using right dosages, how those products will be effective? And that is the slap we get all the time on different platform, different levels. No one talk about. And when you talk about these things, people will say, oh, yes, 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 but nothing happened. And that's where we end up, just keep doing our own things. We know, okay, today, if I'm 70-year-old, how long I can carry on? Maybe another 20 years if I keep stretching myself and follow Dr. Avtarji's principles of life, and maybe keep shouting for another 20 years, and then I will be vanished, right? But then the idea is we need to keep this
shouting for 200 years? And if that is the issue, then what will happen? Nothing will happen. Something must start now, so that the people who are coming in 20 years' time, they can really cherish Ayurveda as we are cherishing India today. And that's what my message is on this NRI days, that we must awake. We must awake and we must do something practically. Not, yes, these seminars are wonderful, these conferences are wonderful, but then the outcome need to be there. Some kind of a follow-up work must be done. That's what and thanks everyone. Thank you, sir. Life technology has extended our shouting also. We will not leave world without reminding them regarding Ayurveda. So our Amar Gatha is being written on YouTube also. So thank you very much. Really salute, sir. Really salute. If Avtar sir kindly permit me, बुजुर्ग कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. कोई बात नहीं. मैं अमित जी को क्या फर्क पड़ता है? जी मेरे को बुजुर्ग कहोगे, मैं कहूंगे चलो भाग कर देख लेते हैं, दौड़ लगा कर. आपको पता भी आपका क्या होगा. तो नहीं कुछ नहीं. मेरे को भमरा जी, डॉक्टर अजीत, जो उन्होंने कहा है वो मैं कई दफा कह चुका हूं. उन्होंने भी वही कहा. जो भी सिंसियर डॉक्टर्स हैं, जो दिल में दर्द रखते हैं, जैसे भमरा जी ने कहा, वो ऐसे ही सोच रहे हैं. मैं वो चीजें दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि 10 मिनट का सर आदरणीय सर, प्रोफेसर पवन शर्मा जी की रिक्वेस्ट है कि अगर आप परमिट करें तो नहीं, कोई बात नहीं. We can't stop in between. We can't stop. No, what did you say? Sorry? नहीं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू. कुछ नहीं सर. नहीं होगा. आप इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ. आप कहते थे लास्ट टाइम के सभी इंडियन को समझ आए. तो हमारा ये this our program is for the most of the Indian people. Other world don't know yet that about the Ayurveda too much. We have to like a last program I said, we have 150 crore people in India, 2-3 crore, 4 crore outside the India, 5 crore. We don't need other people to cure first, then show them we are better in the Ayurveda. If we cure our people, our country, and next door है the Tibet है, Nepal है, Sri Lanka है, Pakistan है, कोई भी country, Burma है, they all know about the Ayurveda. We no need to world first show to the Canada, America, or other people. I know they don't easily recognize the Ayurveda, and we are doing. But one thing I want to clear that when Bhamaraji is here, and he mentioned about when COVID came, now is variant 1 is coming again. He made the one group of there. When my medicine start working in the April first week, we got the COVID patients, and after 1 month, everybody know Dr. Joshi ji. Her granddaughter in the school, she bring the COVID at home. All the 8-9 persons, all succumbed with the COVID के साथ. वही दवाई हमने उनको दी. करीबन जब 20 पेशेंट हो गए तो उन्होंने वो दवाई जो है, वो मेरा फार्मूला जो मैंने एज ए रिसर्चर आई मेक माय ओन फार्मुलेशंस. आई डू हियर इन द यूके custom made medicine, make the 80% medicine here. I buy the ingredients. I know which kind of ingredients is better. I check that one first, then I make my medicine. If medicine herbs come wrong, no good, I throw it away in the bin, straight away. I got the result. That's the reason I challenging the whole world, even a cancer patient, before you go to chemotherapy, come to Ayurveda. If I can't give the result within 2 to 4 weeks, then you go to chemotherapy. And not 1 or 2, so many cancer patients. That time we clear the COVID patients. And Dr. Joshi, the put that treatment जो है वो अपने PhD ग्रुप में डाल दिया. तो इंडिया के PhD ग्रुप वालों से कम 5 लोगों के मेरे को फोन आए.
what you use, what is your protocol, क्या है, only, and then we made the group. In the group, Dr. Bhamra ji try his best. He and Dr. Joshi जो इंडियन गवर्नमेंट को लिखा कि एक मेडिसिन यहाँ यूके में हमने रेडी की है, हमारे साथ है, उससे उस वक्त तक 35 लोग हम कोविड के ठीक कर चुके थे और 35 ही आए थे। ये नहीं कि 300 आया तो फिर 35 ठीक हुए। वो 35 जो भी आया वो उससे ठीक हुआ। हमने किसी को भी 1 वीक से ज्यादा मेडिसिन नहीं दी। उसमें जो मेरा एक स्पेशल फार्मूला है जो लास्ट 35-40 इयर्स अगो मैंने बनाया था, वो बनाया था कैंसर के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, जो उसको हम सप्तकर्मा कहते हैं, फुल बॉडी क्लीन करता है। वो ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें वोमन ब्रेचन की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत अच्छा काम करता है, किसी स्टेज का भी पेशेंट उसको जाता है। वो मैं साथ में देता था, मैंने सब कुछ बताया। पर कोई भी आदमी, ना तो हमें इंडिया गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली उस वक्त, आयुष मिनिस्ट्री से वेंकट जोशी जी को लेटर आया और हियर सो मेनी पीपल आर क्लेमिंग, दिस इज द आंसर फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री। And then they say, some people say, then we offer, we can give us the 2030, it's about 2020, May, June, not 23, that one. And that time, हमने कहा कि just give us the patient, 20 patient, this is my symptom form, questionnaire, fill it, we can send the medicine. उस वक्त किसी को हम देख नहीं सकते थे फेस टू फेस। जितने भी पेशेंट हमारे पास आए, हमने उसी सिम्टम फॉर्म और क्वेश्चनर के ऊपर डायग्नोज करके उनको मेडिसिन भेजी। और हमारे पास तकरीबन 140 पेशेंट हुए, सभी की सभी वेरिएंट के ऊपर एक ही ने काम किया, अभी तक काम करती है वो। तो उस वक्त भमरा जी ने बहुत ट्राई किया, सभी डॉक्टरों को, सभी यही कहते रहे हमें बताओ, हम ये फलानी यूनिवर्सिटी, साथ में वो हमें कहने लगे कि हमें पैसे इतने लगेंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का हमने पता किया, दे नेली 20,000 पाउंड साइंटिफिकली प्रूवन कराने के लिए। उसके बाद यहाँ यूके में उसको ईच इंग्रेडिएंट्स को चेक करने की MRHS से करने के लिए कम से कम 300 पाउंड एक के लगते हैं। मैं 500,000 पाउंड क्यों उसके ऊपर स्पेंड करूं? मैंने उस वक्त कहा ये दवाई बना दी है, ऑल रिकॉर्डेड इन द 2020। तो हमने कहा कि को ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, मैंने उनको ऑफर किया कि मैं एक किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगा, मेरे को एक गुलाब का फूल दे दोगे, सर पर हाथ रख दोगे, यही मेरे लिए बहुत है। ये फार्मूला मैं अपनी आयुष मिनिस्ट्री को देता हूं और इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट मैं कैसे करता हूं, अभी तक जो ठीक की है 2020 के एंड की बात है, तो उसको एक ही कारण होगा, मैं वो अंडर माई सुपरविजन बनेगा, क्यों मैं खुद मेडिसिन बनाता हूं अपने हाथ से, जो सीखा मैं उसी हिसाब से, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट डालता हूं, नियरली 20 उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एक गोली जो है चने के जितनी बनती है, खांसी के लिए क्या काम करती है, बहुत से लोग लिख चुके हैं, तो उसको किसी ने हेल्प नहीं की। आज फिर वही सिस्टम बन रहा है। तो जो इन्होंने किया, क्यों नहीं हुई, उसके लिए आगे जो लोग थे, जो करप्शन मैं बोलूंगा उनको, ये तो अपने मन के दुख की बात हो गई दुख की बात नहीं है। आज तो NRI डे के उपलक्ष्य में हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप मंत्र फॉर सक्सेस बताइए। आज टॉपिक है हमारा मंत्र फॉर सक्सेस। वो जो अजीत जी ने बता दिया, भमरा जी ने बता दिया कि अगर हमारे लोगों में इस करप्शन निकल जाए, हम सही तरह से फार्मूला बनाने सके, फार्मेसियां ठीक बनाने लगे, वो सब हो चुका है। मैं वो उसको मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लाके लास्ट प्रोग्राम में मैं कहा था, अगर हम सही, भमरा जी ने रिकॉर्डिंग भी किया था कि अगर हम सही 50 हर्ब्स भी एज ए वी नीड चाहिए, ये भमरा जी बैठे हैं वेरीफाई, इन्हों का रिकॉर्डिंग की हुई है कि अगर हम 50 हर्ब्स जो हैं आयुर्वेद की प्रॉपर तरीके से ग्रो कर लें जैसे हमें चाहिए, अश्वगंधा को मैच्योर होने के लिए 5 साल चाहिए, 3 महीने में आपको अश्वगंधा ग्रो करके वो दे देते हैं। जो वैद है प्रॉपर जानता है, उसको पता है कितने साल लगते हैं अश्वगंधा का। वो अश्वगंधा, जैसे इन्होंने कहा कि उसकी डोज कितना चाहिए, वात पित्त का पता होना चाहिए, अश्वगंधा के साथ क्या देना है, वो आज का हमारा 80% जो आयुर्वेदाचार्य है वो नहीं जानता।
वो वात पित्त कफ का नाम तो जानता है, मैं ओपनली कहूंगा, बहुत दफा कह चुका हूं। उसको ये नहीं पता ये मिक्स कैसे होते हैं, उनको ये नहीं पता इनके साइन कैसे होते हैं। वो लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं। ये मंत्र ऑफ सक्सेस ये है कि उनको एजुकेट किया जाए। वो क्यों ऐसे करते हैं? मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूं, आयुर्वेद के बहुत से जो डॉक्टर है वो मेरे पेशेंट है, उन्होंने बताया कैसे होता है, क्या हाल होता है। क्यों नहीं आप इतना सीख सके? कि उनको सिखाया नहीं गया प्रॉपर। उनको चाहिए था कि प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता। थ्योरिकली दे लर्न एवरीथिंग, प्रैक्टिकली दे आर वेरी वीक, दे डोंट नो हाउ टू डायग्नोज, दे डोंट नो हाउ टू मेक द फॉर्मुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि विद वेरी सब स्टैंडर्ड, बेटर है कि उसके बगैर तो आप घर में पानी में नमक डालकर सौंफ का काढ़ा ले लो, जिंजर का काढ़ा ले लो, 3-4 चीजें त्रिफला ले लो, उन फार्मेसियों की दवाई लेने के बजाय। जो बढ़िया फार्मेसी अभी भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। आज तो हर कोने पर फार्मेसी बनी हुई है। किसी चीज को रजिस्टर कराना हो, मैंने रजिस्टर कराने के लिए बहुत कोशिश की, पर दे आस्किंग लॉट ऑफ मनी एंड दे से लीव इट 3 months योर फार्मूला। देन सम माय फ्रेंड्स टोल्ड मी मत देना, वाज माय पेशेंट। तो कहने लगा ये आपका फार्मूला ले लेंगे, आधा घंटा पहले की डेट डालकर किसी और के बाद 3 महीने में आपको बोलेंगे दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? We need the support from the Ayush government. You done very good program today. If they do it, as I told 2 weeks ago in one webinar, if आयुर्वेद का सिस्टम प्रॉपर सेट हो जाए, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर, हम एक ही बात है, वैद्य डॉक्टर हकीम एक ही बात होता है, एक ही बाप के नाम है 3, है ना, और अलग अलग कौमें उसको अलग तरीके से पुकारती हैं। तो हम ये लफ्ज आपको याद होगा, मैंने कहा हम इंडिया से एलोपैथी के आधे हॉस्पिटल 2 सालों में बंद करा सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मैं अपने पेशेंट कर रहा हूं, उसमें से अपने पेशेंट आगे फैलाओ। अगर आप ठीक हो जाते हो, बात बताओ कि मैं ठीक हूं। एक तो हमें बहुत बड़ी कमी है हमारे लोगों में, वो आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं करते। जो ट्रस्ट करते हैं तो आगे वो बात दूसरों को नहीं फैलाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 7 महीने पहले एक पोलिश लेडी और उसके हस्बैंड का मैंने ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर जोशी जी ने मेरे को रेफर किया था। आज 10 पेशेंट 12 पेशेंट मेरे पास उसी कंडीशन के, 8 पेशेंट कैंसर के चल रहे हैं। उन्होंने एक दफा बताया, लोग आने लगे। हम एक दूसरे की हेल्प ये कर सकते हैं, लोगों को बताओ आयुर्वेद से डरो मत, आयुर्वेद पर भरोसा करो, तभी करेंगे अगर लोगों को पता चलेगा। जी सर। तो ये हमारा है कि अगर हमने चाहते हैं कि आयुर्वेद का वाकई हम लेकर जाते हैं, एनआरआई कोई कहीं भी बैठा है, डॉक्टर जी सी बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते होंगे डेफिनेटली, मैं पहली दफा उनके दर्शन कर रहा हूं। तो यहाँ यूके में भी है और भी, अगर हम सभी को एक इकट्ठा करके, तो अगर गवर्नमेंट को ये कहा जाए प्लीज मेडिसिन जो है गुड स्टैंडर्ड की बनाएं, और जो अब हमारे वैद्य जो नहीं अच्छी तरह जानते उनको 1-1 साल का और कोर्स कराया जाए अंडर किसी प्रैक्टिशनर के, ताकि वो लर्न कर जाएं। हमारे इतना रेवेन्यू आएगा बाहर से, जो लोग बाहर भागते हैं, लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था, वो सभी हम इंडिया को बचा सकते हैं। जो बाहर जाकर पैसा खर्चते हैं, उनको क्या जरूरत है जाने की? वो हमारा पैसा हमारे घर में रहेगा, बाहर से लोग आएंगे, दवाई भी लेंगे, पैसा भी खर्चेंगे वहां रहने का, तो बाहर से दुनिया हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को फिर प्रणाम करता हूँ। आप मेरे से सब सीनियर हैं, तो पवन जी सबसे सीनियर हैं हमारे में से, तो इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। प्लीज कुछ कीजिए, मोदी जी ने काम कर दिया, हमारा काम है अब ईमानदारी से ट्रीटमेंट करें। अगर नहीं आता तो दूसरे को रेफर करें। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट होगी हमारे लिए कि हम इंडिया को वर्ल्ड गुरु वाक्य का आयुर्वेदा को बना सकते हैं। और भमरा जी यहाँ जो काम कर रहे हैं, मैं एक दफा फिर कहूंगा, बेमिसाल है। उन्होंने जो किया पिछले 20 साल से कर रहे हैं वो ये काम, और किसी से कुछ लेते नहीं है, सब वॉलंटियरली कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं सभी को, आपको भी इस प्रोग्राम को रखने के लिए बहुत बहुत प्यार। अग्निहोत्री जी शायद मेरे को पहचानते होंगे थोड़े से, नमस्कार आपको। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। पिछले 5 साल से सर, पिछले 5 साल से हम लोग टॉपिक रख रहे थे, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ आयुष इन अब्रॉड। इस बार पहली बार आप लोगों से
गुरु मंत्र लेने को, ये मंत्रा फॉर सक्सेस टॉपिक है आज का हमारा, क्योंकि रोहित हमारे और दिल में दर्द सबके में बहुत, पता है सर दर्द तो हम लोगों के सबके दिल में है। हम खुद यहाँ इंडिया में बैठ के बोलते हैं कि रॉ मटेरियल सही नहीं मिलता, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन वो आज का तो सेलिब्रेशन है एनआरआई का, तो सेलिब्रेट करने के लिए हम ये अपने अगले वक्ताओं से ए, प्रार्थना करते हैं ए, कि एक आप सेकंड दर्शकों एक को बताएं कि गुरु मंत्र क्या है, मंत्र क्या है सक्सेस उनका, कृपा करके उस पर फोकस करें। अगले वक्ताओं से मैं प्रार्थना करूंगा। अवतार सर कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि ये वैद्यों जी को अवतार ये सर कुछ करना कह रहे होगा थे। कि वो अगर सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो ना लें, कोई भी हो वो ना यूज करें, क्योंकि बदनामी आयुर्वेद की और उसकी होती है। अरे सर 90% वही अवेलेबल है, वैसे ही वैद्य और वैसे नहीं ही नहीं, दवाइयां, इसलिए कुछ उसको मत बोल नहीं यूज सकते। करें, खुद बनाएं। लास्ट टाइम मैंने कहा था 5-7 मिलकर बना लें। मैं यहाँ च्यवनप्राश नॉट बनाता हूँ, पॉसिबल, सभी यहाँ नॉट बनाता हूँ। पॉसिबल एट ऑल। नहीं सर पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरे 19 भोपाल में 19 आयुर्वेद कॉलेज हैं, 2000 स्टूडेंट निकलते हैं, हम्म 2000 स्टूडेंट्स पर ईयर हम्म ऑफ बीएमएस। How they can make their industry or medicine, they are dependent on the available medicines in the market. So this is absolutely hypothetical, no doubt. Senior Vaidyas can do. Vaidyas, those who have infrastructure for that, they only can do. Otherwise, normal Vaidya cannot do. We एक will be forcing them, otherwise it is not possible. एक बात मैं आपको So, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप कभी प्रोग्राम आगे रखना, की, मैं उनको बताऊंगा कि कितना इजी है वो। मैं अगर अरे यहाँ सर बना इजी सकता तो हूँ। है, अरे इजी तो है, लोगों की मेंटेलिटी नहीं है। हाँ फिर ठीक इजी है, तो है, फिर बहुत अच्छी बात हाँ है। इजी तो 100%। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ये तो बात नाउ ठीक आई है। वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमित गुम्मन। डॉक्टर अमित जी, आई एम सॉरी यू आर लेट, बट No, डॉक्टर no, that's अमित जी okay. का। Yeah, thank you so much. आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार, and a warm greetings from cold Oklahoma. Let me show you the weather here. This is right outside my clinic. We have got snow falling here in Oklahoma, so that's generally doesn't happen. Um, so glad to be here. Thank you so much. Let me change this here. So my name is Amit Guman. I'm an Ayurvedic physician, also trained as an MD here in Oklahoma for last 30 years. So I have a practice here where, let me give you a little bit background about my practice here, which I've been doing. Luckily today, being the snow weather, we don't have very many patients. This is my clinic. Here is Melissa. She's our front office. This is our waiting room. And let me just give you a little tour of my clinic, and then we'll talk a little more before, and I'll get in and we can talk more. So here योर is पिक्चर Oklahoma. इज क्लियर बट दैट इज ब्लर्ड, एक्सेप्ट Yes, यू sir. एवरीथिंग इज ब्लर्ड, एक्सेप्ट योर फोटो It's एवरीथिंग blood. इज Oh, hang on. Okay. All right. Here we go. So this is outside the clinic. We have snow falling, ग्रेट। and we have less patients today because of the snow weather. This is Harmony Healing Center, and we call this Harmony Bridge, building a bridge between Eastern and Western medicine. This is a very busy intersection in Oklahoma City, one of the busiest intersections where we have major hospitals. And that's my clinic. I thought I'll just give you a little tour of the clinic. And since it was blurred, this is our boss here, Melissa. She manages the front desk. She's the front manager. This is our waiting room. And I'll have to go in a few minutes, but before I do that, I'm going to be back again. So I was listening to all the doctors. They were talking about medicines. So we do that here. We manufacture Ayurvedic medicines here. We have Harmony Nutraceuticals. And we do manufacture medicines here. And we do address the issue of the dosage and the quality.
So that can be done, but I know it's very difficult for people to do it in a small practice. So, like say, for example, you are giving the example of ashwagandha. This is our ashwagandha, where we manufacture here with extractions. So we call it ashwin. And we use ethanolides, 5%, which means it makes it much concentrated. And so we are able to reach the dosage. We make it liposomal, since ashwagandha is fat soluble, so we make it liposomal. And we have synergized with Tricatu, which is Sont Marish Pipli. We call it Triparing. So we are able to deal with many of these issues, which Dr. Ajit and Dr. Raftar were mentioning. And so here I'm back. So again, warm greetings to you all. So nice to meet you all here. And the way I look at this is India मेरी मातृभूमि है और ये अमेरिका हमारी कर्म भूमि पितृ भूमि बन गई है. तो यहाँ पे we have a very busy Ayurvedic practice here. We serve about 500 patients every month, and we see patients from all over the state of Oklahoma. And so what I had been hearing from many of our speakers, esteemed learned speakers, is कि गवर्नमेंट से ये करना चाहिए, गवर्नमेंट से ये मांगना चाहिए, लोग को ये करना चाहिए. मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर. ये ओक्लाहोमा एक पिछड़ा स्टेट है जहाँ पे it's not like California or New York or Chicago or other places. Here people are mostly not very familiar with Ayurveda. In spite of that, we could build one of the busiest Ayurvedic practices in the whole North America here. It's not to boast or it's not to brag. It's just to say, is आप अपना लगे रहो, कर्म किए जाओ, दिल से, जान से, उत्साह से, प्यार से. So शर्मा जी, पवन जी कह रहे थे मंत्र क्या है, तो मंत्र तो मेरा यही है कि आप लगे रहो. जैसे मूवी थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहें प्यार से, बिल्कुल उत्साह से, जी जान से, सेवा से. तो पेशेंट तो देखिए भाई इंसान है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या यूके में हो. It doesn't make a difference. It makes, yes, the rules are different. Things we can do in this country are different than what we can do in India. But bottom line तो यही है कि जो है इंसान है, तो आप उसको अगर एक सेवा भाव से देखते हो तो, और उसको फायदा होता है, तो कहीं भी हो आपके पास आएगा वो. So that had been my secret of success in this place. When I started here 30 years ago, I started in August of 1994, my practice here in Oklahoma. And it was very difficult, very tough. There was hardly any awareness of Ayurveda or acupuncture or Eastern medicine. And I think the key for success was the results of the patients, so, results in them. So they don't care. Like here, if a patient here I see is who has pain, who has amvata, who has migraine, they don't care कि आप क्या दवाई दे रहे हो, आपकी क्या फिलॉसफी है, आपका क्या सिद्धांत है. आप उनको तो बस आपको फायदा चाहिए. And if they can get benefit from your treatment, people will come from all over. So that's what had been my secret of success here, and that's my mantra of success. So I'll be open to taking questions rather than going one way, so that it can be a dialogue rather than a one way traffic. You are very right. Excellent. You have shown your excellent infrastructure there in Oklahoma. You are telling that is a backward state, but your forward infrastructure really impressed. Really impressed. Oh, thank you so much. Excellent, Amit ji.
जोड़ते रहिएगा। मेरा कहना यह है, हमारे 2-3 स्पीकर हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन का ठीक है, इनवाइट ठीक, करेंगे। चलिए। विवेक जी के नाम से क्या रघु जी जुड़े हुए हैं? विवेक जी के मोबाइल से। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर हरिशंकर शर्मा जी, प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा जी। मेरे गुरु का नाम है, मुझे उनमें अपने गुरु नजर आते हैं। वो नीदरलैंड्स में है, लेकिन उनका नाम मुझे हमेशा मेरे आदरणीय गुरु गुरुदेव, वो भी एनआरआई थे जापान में, तो प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा जी की याद हमेशा दिला जाते हैं, प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम सर। ग्रीटिंग्स टू ऑल नमस्कार ऑफ यू। आपको आवाज आ रही है जी? ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ओक्लाहोमा से आप जो बता रहे थे, उनका जो मंत्रा है वाकई मानना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली द the mantra which anybody who is successful any part of the world, not alone US, West particularly, आपको वो एक चार्म रखना होगा, एक एंथुजियाज्म रखना होगा, वो एक आत्मीयता रखनी होगी, एक कोऑपरेटिविटी रखनी होगी, तभी आप सक्सेस पा जाएंगे। फिर उसमें दूसरा ये भी है कि आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सक्षम बनाएं। आई मीन यू शुड बिकम वन ऑफ द एक्सपर्ट इन सर्टेन एरिया। मतलब बिकॉज ह्यूमन बॉडी और एलिमेंट्स तो इतने ज्यादा हैं, तो यदि इफ यू विल स्पेशलाइज योरसेल्फ एंड उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जितनी एक्सपीरियंस जुटा सकते हैं, उसके बेसिस पे यदि आप ट्रीट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बट एक जो अभी प्रॉब्लम हमने सब लोगों के माध्यम से सुनी कि वो जो दवाएं इंडिया से आ रही हैं या जो फॉर्मुलेशंस हैं, if those can be controlled, if the government can put up, or like anything which is being sold here in Europe, for example, even in my country, in Netherlands, they are they are well tested, well confirmed, well uh, you know uh, after finding all the availability, bioavailability and all that, तभी वो मार्केट में आती हैं। तो उस तरीके से इंडिया में अब यहाँ आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं कि भाई इसमें लेड कंटेंट ज्यादा है, फला कंटेंट ज्यादा है, हैवी मेटल्स हैं। तो इफ वी कैन रेगुलेट दैट far better there in India, तो then I think it will be doable. और जो वहाँ यूएस में बना रहे हैं वो दवाएं, या तो वो सब उनका कंट्रोल्ड मैनर है, और how they are using probably lot of chemicals to synthesize formulations. What they are using, I have really no clue. But when it comes to the extracts and plant based medicine, तो उनके लिए तो you need to have a huge setup, all medicinal plants, and everything has to, in a very clean environment. So that's what I can understand. Not exactly my area, not exactly my expertise, but as a scientist with the with the international reputation in the field of blood vessels, I can only assure that we need to have a very, very verified, very controlled medicine, which can go out to the market. तो इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सब लोग मिलकर के एक बॉडी गवर्नमेंट की ऐसी बने कि जिसमें ये तय हो और पूरा कंट्रोल किया जाए कि ऐसा कोई भी कहीं भी कुछ भी सिंथेसाइज कर रहा है तो दैट शुड नॉट बी अलाउड। तो दैट इज माय कंसर्न। बट आई थिंक the mantra, when it comes to the mantra of success,
just my previous speaker from Oklahoma, he really highlighted those 4 or 5 words, and I think those are extremely important and valid words. कि हम लोग we लगे रहो वाली जो बात कही कि I mean there is a continuation in our work pattern, and also specializing in certain area. So the people working abroad or even in India, if they specialize individually, and then also to help out each other. I think I fully agree with डॉक्टर साहब जो लंदन से कॉल कर रहे हैं कि we need to help out each other. We need to share our expertise, as well as we need to refer people, the patients from one to the other. And I think these are the very key situations by which we can achieve our goals, and have the Ayurveda at an international level, one of the parallel treatment strategy in the Western world as well. If we can really strengthen our quality and strengthen our cooperativity with the people working all around. And I think the initiative with Dr. Pavan Sharma ji has taken to bring people from all over the world on one platform is highly creditable. It's highly creditable because I think this is the way we share our experience. This is the way we can help, not only help but also learn from each other. And but I think the humility, आत्मीयता जिसे कहते हैं आप लोग, वो बहुत ज़रूरी है. और मतलब जो एक पैटर्न हमने देखा इंडिया में क्लिनिशियंस का, हमारे भी बहुत सारे साथी हम जाते हैं भारत में, तो दे आर ऑल some of them are very arrogant, तो वो arrogance नहीं होनी चाहिए. यदि आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं being a doctor, तो you can achieve really a lot. You can definitely achieve and help the society at large. तो मेरा तो यही कहना होगा. मैं सबके लिए थैंक यू जी सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम जुड़ते हैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं. अभी हमारे एक और मीटिंग हमारे डिपार्टमेंट की, एक पूरा गेट टुगेदर होता है पूरा स्टाफ गैदरिंग, तो उसमें थे. तो वहां से हम बीच में निकल के आए कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि 5 बजे के बाद ही 5 बजे के बाद ही जुड़ पाएंगे. So all the best to everyone, from New Zealand to Australia to Oklahoma and England. All the good luck, and also Canada. I think someone from Canada is joining. So all the best. Greetings from the cold and windy and wet Netherlands. हमारे यहाँ तो बारिश कुछ स्नो रेन हो रही है आज. तो बहुत ठंडा है यहाँ पे भी. थैंक यू जी. Everywhere is मैं good. आपका नाम लेने में संकोच आता है. नहीं आपका नाम लेने के पहले गुरुदेव निकल जाता है. जी वो शर्मा जी असल में वहाँ यूएस में एक कोलंबस जगह है, तो वहाँ पे उनके बारे में जिक्र हुआ. हमने कहा कि हाँ, मतलब उनका तो बहुत रोल रहा है. और बट आई थिंक उनकी मिसेस शायद वहाँ पे हैं अभी, अहमदाबाद में रहती हैं शायद, के नहीं. ओसाका. अच्छा, वो ओसाका चली गई. ओके. ओसाका में ही है वो. शी इज सेटल्ड इन ओसाका. ओके. डॉक्टर हिरोए इनामुरा शर्मा, शी इज जापानीज. हाँ, नहीं वो अहमदाबाद में रहा करते थे ना पहले कहीं. नहीं, जामनगर में रहते थे जब तक वो नौकरी में थे. अच्छा. जी. बहुत आभार आपका. हाँ, उनका काफी काम रहा है. मतलब उनकी किताबें वगैरह. मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको नाम से बुलाने के चक्कर में मेरे मुंह से गुरुदेव निकल जाता है. क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की कि मैं किसी को हरिशंकर शर्मा जी कह के बुलाऊंगा. रियली बोल रहा हूँ, बाय
हार्ट बदला हूँ। आपका नाम लेने के पहले गुरुदेव निकल जाता है, मैं नहीं, क्या हमसे करूं। जय हो। हमसे बड़े थे वो। शर्मा जी ये ऐसे ही फंसाते हैं। ओके। जय हो, जय हो। नहीं सभी को ऐसे प्यार करके फंसाते हैं ये। नहीं नहीं, आप तो ओरिजिनल गुरुदेव हो, आप हो भामरा जी हैं, ये सब मेरे बड़े भाई गुरुदेव सब है मेरे। अरे ओके नहीं ओके तो मैं ओके मुन्ना भाई। शैकत जी के पहले, वामना नहीं जी तो हमारे यहाँ शैकत जी के हॉलैंड पहले विवेक जी आते हमारे रहे साथ हैं, हैं। कॉन्फ्रेंसेस आई में वुड आते रहे लाइक हैं टू वामना इनवाइट जी। विवेक, बहुत जी अच्छा जी। बोले डॉक्टर आप, क्या विवेक। बात। विवेक जी, would you like to say something before our last speaker? नीड टू अनम्यूट। Please unmute. Hello. Yeah, thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. Myself, Dr. नमस्कार। विवेक चड्ढा। हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। थैंक यू वेरी थैंक यू। डॉक्टर अमित से मिले अभी पीछे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में, हम दोनों इकट्ठे ही थे वहाँ पे। मैं कनाडा में हूँ एट प्रेजेंट। वही सेम है, मंत्रा फॉर सक्सेस तो वही है अपना, तो एक ही है, सिंपल, चिकित्सा नास्ति निष्फला, सीधी सी बात है। वेन एवर यू ट्रीट यू विल गेट समथिंग, अर्थ मिल जाएगा, नहीं तो यश मिल जाएगा। ठीक बोले। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपना फोन नंबर आपको डाल दे रहा हूँ, प्लीज सेंड थैंक योर डिटेल्स टू मी। आई थैंक वुड यू। लाइक टू इनवाइट यू फॉर आवर वेबिनार्स। श्योर श्योर श्योर, माय जैसे नेम मर्जी। इज डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, आई विल डू। मैंने चैट राइट नाउ बॉक्स मेरा, में अपना नंबर डाल दिया है। थैंक यू जी। या सो मैं आप कनाडा में ही कनाडा में प्रैक्टिस कब करता से हूँ। हैं विवेक मेरे जी? को हो गई 2017 आई स्टार्टेड हियर। वाओ। बस वही जो इशू, एंड जैसे डॉक्टर फ्रॉम, अमित ने कहा, ग्रेजुएट फ्रॉम कुरुक्षेत्र। बहुत अच्छा। किस 91, कॉलेज से गए थे यहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट कॉलेज से था। 1991 में मैंने अपना डिग्री पास आउट किया था। ग्रेट या ग्रेट ग्रेट। सो अब मेरा भी अपना नाइस सेटअप टू जैसे मीट आप यू, देख रहे जुड़ते होंगे। रहिए या सेम जी। सेटअप जैसे आपने देख रहे हैं कि क्लिनिक सेटअप है, गुड। मेडिसिन अपनी तरफ से रखी हुई यहाँ पे। या सो इट्स गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। या हाँ जी, हाँ जी सर, सब गुड है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आज अमित जी ने कहा, तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन करते हैं आज आपको। थैंक यू। थैंक जुड़ते यू, मोस्ट रहिएगा, वेलकम। मैं भेजता थैंक यू जी। रहूंगा। आप अपने डिटेल मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं भेजता रहूंगा। श्योर श्योर जी, श्योर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर टेकिंग मैं मी। कनाडा के ही डॉक्टर शैकत कुमार बसु को सादर आमंत्रित करता हूँ। शैकत कुमार बसु जी, लेथल ब्रिज। थैंक यू शर्मा जी। थोड़े मैं यही दर्शन दीजिए शैकत जी, आज तो दर्शन, मैं सो जनरली गया हूँ। जनवरी। मैं सो गया हूँ शर्मा जी, आज उठ नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा सिक हूँ, सो दर्शन नहीं दे पाऊंगा, गॉड तो ब्लेस, क्षमा चाहता गॉड हूँ। ब्लेस। लेकिन आई एक्सटेंड माई हार्टीएस्ट बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आज हम इधर सभी इकट्ठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एनआरआई डे की। लेकिन थोड़े चीज हमको एफर्ट करना चाहिए। एक तो आयुर्वेद को प्रसार के लिए सिर्फ वो जो हम डिफरेंट कंट्रीज में सेटल्ड हुए हैं, आयुर्वेद को तो ये रिकॉग्नाइज ऐसे तो नहीं करेंगे, और ये रिकॉग्निशन मिलना बड़ी दूरस्थ की बात है। तो बट दैट एट द सेम टाइम it does not mean that people have a lot of interest in Ayurveda post our COVID situation. So I think it is this tempo that has created in the world regarding the interest in Ayurveda needs to be rejuvenated and continued with that rest, so that at least as an herbal medicine,
it spread and its popularity continues. आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखेंगे इंक्लूडिंग कनाडा, वो जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंदर एज एन इम्यूनिटी बूस्टर्स, एज मेडिकल सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह इसके भरे पड़े हैं. सो मेनी कंपनीज एंड ड्रग्स वगैरह Indian companies are selling, whether they are fenugreek seed capsules या कोई दूसरे capsules, they are coming in large numbers and it has become quite a bit popular. आज कोई cough, कोई problem हो रहा है वगैरह, they people are of even from non-Indian origin are going and buying those from the stores because they have this faith in this plant medicine. So I think in this way, we have reached a great height. Now it is time that the government also supports and we continue to have fairs, programs where doctors and others also join in these platforms so that the boost for Ayurveda continues with the same zeal and stuff. Not even if it is not as a medical system that may be accepted, our medical products are coming in large numbers, and that in that sense it is also adding to our foreign trade, earning of foreign exchange, and also an acceptability of the system as a whole, as a holistic medicine in various other countries, including Canada. So even that is also a very big achievement. It is important now that just like the the World Yoga Day, I think there is a strong need for advocacy from the government and all of us around the world to push for United Nations for accepting a world international Ayurveda Day. These popularization or designation of the days are very important, and we need to push for it for a longer effort with the help of the NRIs who are settled in different countries. And I extend my sincere love and appreciation to you all that we have all gathered, and let us push this platform to the best of our ability forward. Thank you very much. It has been a pleasure to be a part of your platform, and we'll continue to support this and push it forward on various platforms. Thank you so much, Sharmaji. It has been a pleasure being with you. And hats off to your Thank effort you. for bringing so many people together under one platform. It's not easy. It's a tedious job, but you have been doing to the best of your ability. Thank you so much. We greatly appreciate your efforts. Thank you very much जी. Thank you very much. मैं अब आदरणीय भामरा सर और अवतार सर से दो आशीर्वाद के शब्द जरूर लेना चाहूंगा. हम इंडियंस को, इंडियन तो आप भी हैं, हम आरआई को बुलाएं उसके पहले एनआरआई से आदरणीय भामरा सर आशीर्वाद के दो शब्द, और अवतार सर, फिर हमारे साथ सीपी शर्मा जी एक्स जॉइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उनसे हम अग्निहोत्री सर के पहले आदरणीय भामरा सर. हाँ जी, शर्मा जी, थैंक यू सो मच. बहुत मेहरबानी आपकी. I think something Dr. Ajit Singh said was very, very exciting. And he was talking about how, delegates are welcomed in India and only allowed 4 or 5 minutes to speak after spending so much money in travel and hotel accommodation. I really hope that, this the platform that you have initiated with blessings of Professor Agnihotri ji and all your patrons, that one day that you make it possible to arrange such a conference for NRI Ayurvedic physicians in India. And and some of the things, that all the learned speakers have been speaking about will be a colossal event, whereas many conferences take place in India. As you know, there was one last month and there will be another one and another one. But this will be very unique to actually organize through your platform an NRI Ayurveda conference, and to have it 2 days, 3 days, and we can engage, some wonderful mandir and gurdwara langar there, and have a wonderful program somewhere in middle of India, so it's easy for everyone to attend. So I would humbly request you to please consider that. Thank you so much. Hari Om. योर ब्लेसिंग्स, योर ब्लेसिंग्स. आपकी जब डिजायर हुई है तो भोलेनाथ पूरी भी करेगा सर हमारे थ्रू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग अस. थैंक यू. मुझे याद आती है हरिनाथ झा की. हरिनाथ झा है एक आनंद में
वैद्य हरिनाथ झा, बहुत बड़ा नाम है गुजरात का। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की वेबिनार सेमिनार, अक्षरधाम वाली पूरी के पूरे 350 रूम बुक किए, 5,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 3,000 का कंफर्मेशन आया। उनने 3,000 का पूरा अरेंजमेंट विदाउट एनी फीस सर, नो रजिस्ट्रेशन फीस। और उसके बाद गड़बड़ ये हुई, वो मतलब बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस था। केवल 650 लोग आए, 3,000 आदमियों का अरेंजमेंट रखा रह गया, जबकि कम से कम 70 कंट्रीज से लोगों ने हाँ किया था, कंफर्म किया था, 3,000 लोगों ने सर। तो इसीलिए सोच समझ के जैसा आप आदेश करोगे हम करने को तैयार हैं। हमारा मानसरोवर जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी हम करा सकते हैं, आप जैसा आदेश करोगे। यहाँ 300 स्टूडेंट हर साल एडमिट होते हैं आयुर्वेद के, 40 फैकल्टी हैं, टोटल हमारे यहाँ 15,000 स्टूडेंट्स हैं लगभग। तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कंडक्ट दैट सेमिनार अंडर योर वैल्यूएबल गाइडेंस सर, डेफिनेटली। Sir, थैंक यू वेरी मच। Ayurveda's simple living, high thinking. We need to follow that principle and keep it short and राइट simple, सर। so that the High Command, the Prime Minister Modi, and the High Command and the Ministry of Ayush see that there is a formidable force of Ayurvedic warriors outside India too. मोदी जी के आने से बहुत डेवलपमेंट हुआ आयुष का सर, Yeah. बहुत बजट भी बढ़ा। लेकिन अभी भी हमारा बजट किसी भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से बराबर है। एक इंडिया का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंसेस, उसका जितना बजट होता है उतने के लगभग हमारा पूरे आयुर्वेद का पूरे वर्ल्ड के लिए बजट है, जिसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है और बढ़ने की गुंजाइश अभी बाकी है, नो डाउट। ये हाँ जी। थैंक यू सर। अवतार सर, आपका आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पीकर्स। बहुत ज्यादा 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत सभी अपना अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी के सजेशन जो थे आपने नोट कर लिए होंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि आयुर्वेद का जो प्रैक्टिशनर है वो अगर एक बात में, दो में, किसी में स्किल्ड हो जाता है तो उनके पास से दोबारा पेशेंट कहीं और नहीं जाएगा। वो एक दफा करके देख रहे हैं ये रास्ता अपनाकर, दोबारा पेशेंट कहीं नहीं जाएगा। उसको क्या जरूरत है कि हॉस्पिटल में जाकर 1 लाख या 50,000 जमा करे, उसका 5,000 में काम होता है आयुर्वेद से। वेरी सिंपल। और जो दवाइयां बनानी है, अगर मैं इंग्लैंड में रहकर 80% मेरी मेडिसिन है वो यहाँ बना सकता हूँ, तो उसको मैंने ऐसे तरीके से मॉडिफाई किया है। कोई भी उसके, आपने कहा कि इतने कॉलेज हैं, मैं ऑलवेज हैप्पी हूँ कि उनको बताऊं कि कैसे बनानी है। बहुत मुश्किल नहीं है। हमें बहुत सी दवाइयां नहीं चाहिए, बहुत कम दवाइयां चाहिए बॉडी का सिस्टम बैलेंस करने के लिए। हमें 5,000 2,000 दवाइयां, 10-15 दवाइयां भी आप बना लोगे, उससे आप जिस चीज के स्पेशलिस्ट से बनाओ, मैं यही कहकर सभी को बोलूंगा कि हम बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-4 महीने लगते हैं सीखने के लिए, और सीखना चाहिए। अगर हमने विन करना है कुछ, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, उसका माइंड चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आजाद करा सकते हैं हिंदुस्तान को, तो ये दवाइयां बनानी क्या मुश्किल है अपने लिए। बहुत बहुत आभार सर। अगर मैं तो हिंदुस्तान आजाद करा लिया, इतने जी इन्वेडर भगा दिए हमने, तो अभी अब जी सर। दवाइयां बनाने से मत डरो यार। ओके मुन्ना भाई, हम एक नहीं काम नहीं, मैं करेंगे। बता रहा हूँ आपको, मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर, मैं उस सेंस में नहीं बोला, फैक्ट बता रहा हूँ। आयुर्वेद के हमारे फॉर्मुलेशन है 1.48 लैक्स। हम्म। आयुर्वेद के 1.48 लैक्स हमारे फॉर्मुलेशन है। टीकेडीएल में दे आर बीइंग रजिस्टर्ड, बहुत सारे रजिस्टर हो चुके हैं। आप सोचिएगा कहां से आ रहा हूं मैं। मेरे को पता है। 1.4 लाख फॉर्मुलेशन में, 1.4 लाख फॉर्मुलेशन अपने यदि हैं, तो उसकी एक बनी लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर डिस्पेंसरी, हाँ आयुर्वेद की बनी, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। हाँ और उसमें 1.4 लाख के बजाय 350 प्रोडक्ट आए हाँ कि एक डिस्पेंसरी में
450 प्रोडक्ट हमारे, जुड़िए ना शेखर जी प्लीज। तो वो 350 प्रोडक्ट हमारे आए केवल, सुनिएगा गौर से सर। अरे यार वेबिनार में हूँ, प्लीज जुड़िए। हाँ। तो वो केवल 350 प्रोडक्ट आए सर। और कमाल की बात, किसी भी डिस्पेंसरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 350 प्रोडक्ट नहीं मिलते। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं समझता केवल हूँ। 50 प्रोडक्टों में यदि हमारा आयुर्वेद सस्टेन हो सकता है, रिजल्ट दिखा सकता है, वो भी तब हम कह रहे हैं जब हम बार बार इस बात को दुखी होते हैं कि हमारे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की क्वालिटी ठीक नहीं है। बिल्कुल जब बिल्कुल ठीक। क्वालिटी ठीक नहीं है तो सुनिए ना, सुनिए सर, मेरे लेट मी कंप्लीट काइंडली। तो वो जब क्वालिटी ठीक नहीं है, हम पे नंबर 0.5% भी नहीं है दवाइयों का, तो भी हम आयुर्वेद का चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या बात काश मेरा सपना पूरा हो जाए गुरुदेव, यदि मेरे 1.5 लाख फॉर्मुलेशन जिस दिन प्रयोग में आने लगेंगे तो आयुर्वेद विश्व गुरु बना देगा भारत को। पोटली चली गई, अंजन चला गया, अश्वतन चला गया, अर्क चला गया, द्राव चला गया, द्रुति चली गई। कितनी कल्पनाओं की नाम लूं मैं जो एक्सटिंक्ट हो गई, और जबकि वो बड़ी चमत्कारी थी। आज तो डॉक्टर बोल देते हैं बच्चे को, कान में तेल नहीं डालना, आंख में अंजन नहीं लगाना, डीसीआर करना पड़ेगा, डेक्रोसिस्टोराइडोस्टोमी। तो हम कहाँ जिंदा है? जब हम हमारे आयुर्वेद की, जैसे आपने कहा 10-15 दवाइयां, मैं कहता हूं 50 दवाइयों से हम पूरी प्रैक्टिस चला लेते हैं, तो सोचिए वो कितना दिन सुहाना होगा सर, जब कम से कम हमारी 1000 दवाइयां हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। 1000, मैंने एक कंपटीशन किया सर इस सोसाइटी से, 6 महीना लगे उस कंपटीशन में। झंडू में था मैंने डॉक्टरों को लिखा कि आप अपने मन से कितनी दवाइयां मैक्सिमम लिखते हो, उतनी की एक लिस्ट दे दो। नकल मत करना, अपने मन से लिखना कि आप पूरी प्रैक्टिस में कितनी दवाइयां लिखते हो। आप विश्वास मानेंगे सर, बहुत बुजुर्ग वैद्य की सबसे बड़ी लिस्ट केवल 145 जड़ी बूटी की थी, 145 कंपाउंड की थी। उनका ओ, कहना था कि मैंने पूरी जिंदगी इन 145 में निकाल ली। अदरवाइज जनरल आयुर्वेदिक डॉक्टर 60 से 70 दवाइयों के ऊपर नाम नहीं लिख पाया, नहीं लिख पाया। कम से कम 1500 एंट्री आई थी मेरे पास, और 1500 एंट्री में 60 से 70, 60-70, 60-70, माने एक आयुर्वेद का डॉक्टर 60-70 दवाइयों से यदि विश्व को ठीक कर सकता है, तो हमारे 1.5 लाख फॉर्मूले जब मार्केट में आ जाएंगे सर, क्या होगा हमारा हम नहीं जानते। लेकिन उसके पहले आपका आशीर्वाद जरूरी है। आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, सब सपने साकार होंगे। अग्निहोत्री सर। ओके। हमारा प्यार ऑलवेज आपके साथ है। जय हो, आपसे जय हो। धन्यवाद पुरुषोत्तम शर्मा जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिल्कुल हृदय की गहराइयों से अपनी चिंताएं, अपने विचार, अपनी माने एगोनी सब कुछ बतलाई। और मेरा तो मन ये किया कि हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो सारे एनआरआई और एनआरआई परिवार उनका इतना गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इंडियन कल्चर्स के डांस और कोई और हर किसी को वो भी पूरा हाथ बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं, मिलते प्यार प्यार उंडेलते हैं। तो कुछ भारत सरकार भी हमारे एनआरआईओं के लिए कुछ तो रेसिप्रोकेट करे, जिससे उनके जो कार्य में बाधाएं आती हैं। एक तरफ जहाँ केवल आयुर्वेद के विशेषज्ञ वहां पर आयुर्वेद के ज्ञान को अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार हर देश के नागरिकों को मानवीय अधिक तरीके से दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतना तो कर सकें कि हमारी श्रेष्ठतम औषधियां भारत से प्राप्त हो सकें। और कुछ जिन जिन देशों में हमारे एनआरआई मौजूद हैं, उन देशों की सरकारों से इतने पैक्ट कर लें, इतना एक बना लें कि वो हमें आराम से, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो मजी साहब कुछ This दिखला is रहे हैं Prime जी। Minister Modi ji या with Prince King Charles in London
when we जी inaugurated the Center of Excellence for Indian Medicine जी in London. नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने विश्व में आज वो अपनी इमेज बनाई है कि विश्व के सभी राष्ट्र मित्र राष्ट्र हो गए हैं जो भारत की फिलॉसफी से संबंध रखते हैं। और आज के हमारे सभी आदरणीय जो मनीषी हैं, दिग्गज हैं, एक्सपर्ट्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सबकी तरफ भी वो अपना एक प्यार भरा कुछ तो संदेश भेजें। साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई कि हमारे एनआरआईज के मैंने ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो रक्त बह रहा है जो आईएनए से लेके और हमारे कहना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी हैं। तो कम से कम अगर भारत में उसके लिए एक संगठन है और उनको काम मिलता है, उनको पेंशन्स मिलती हैं, तो हम कहते हैं वो सब छोड़ दिए। हमारे साथियों में इतना बाहुबल और इतना मानसिक बल है कि उसके बल पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी और आयुर्वेद की दोनों की अच्छी छवि अच्छा बनाया है। तो कुछ डिसेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी होनी चाहिए कि वो उनको इतना संबल दे, एक। और दूसरा ये कि जो हमारे आईएनए के लोग थे उसमें पॉलिटिकल नहीं थे, कमिटेड थे अपने देश की कॉज के लिए, अपने देश को, भारत को आजाद कराने के लिए। तो आज भी पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के आयुर्वेद को एक वो विधा मान के चले कि इससे जनहित हो रहा है, विश्व हित हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हमारी हैवी मेटल्स की बात अभी अजीत साहब कह रहे थे, अब मैं कहता हूँ हमारे तो हैवी मेटल्स को वो लोग पकड़ते हैं, उनकी तो एक छोटी सी एनाल्जेसिक, एक एंटीबायोटिक, वो सब हिपेटोटॉक्सिक होता है और फिर भी आंख बंद करके लिखते हैं और बाद में वो नीचे लिखते भी एक रिसर्च होती है और नीचे आफ्टर इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस लिखते हैं। क्लोरोमाइसिन ने डेफनेस तक पैदा करी, तो वो उनको किसने कहाँ डिस्कार्ड किया या क्या उन पर एक्शन हुआ? हमारे च्यवनप्राश पे आज तक तो नहीं किसी ने कोई तोहमत लगाई कि साहब इसमें यह कमी थी तो इससे ये नुकसान हुआ। तो ये बड़ा डिप्रेस करने की बात है। भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं और हमारी भारत की विधा जो तब भी थी, मुगलों से पहले थी, राजा अशोक के जमाने से थी, विक्रमादित्य के जमाने से थी। और ये कितनी बड़ी श्रृंखला समझिए ज्ञान की है, जो कर्ण शब्द परंपरा से, जब लिखित में टेक्स्ट नहीं थे तब भी जिंदा थी, तब भी फॉर्मुलेशन थे, तभी लोग काम करते थे, व्यक्तिगत स्तर पर करते थे और अपने मरीजों की सेवा करते थे। बल्कि हम तो कहेंगे रामायण और महाभारत काल से ही आयुर्वेद ही था। जो भी उस समय पर योद्धाओं को और हमारे युद्ध के कैटल्स को, घोड़ों को, हाथियों को और कोई कष्ट हो जाता था तो उसकी तुरंत रेमेडी होती थी और इतनी फास्ट हीलिंग होती थी कि अगले दिन सवेरे फिर लड़ने को तैयार होते थे। तो वो लेप, वो स्थानीय प्रयोग की चीजें, वो जड़ी बूटियां जिनके ऊपर आज हमारा अगर ज्ञान मिलता है, शास्त्र में मिलता है, तो जो लोग करना चाहते हैं उनमें कम से कम अवे फिर भारतीय भी हैं, तो भारत सरकार का कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने अपने संदेश दिए, अपनी ग्रीटिंग्स दी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। हम गदगद हैं, हम बड़े अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। वी आर फीलिंग माई सेल्फ मच मोर स्ट्रेंथन एंड सो द स्ट्रेंथन आवर प्लेटफॉर्म with your kind blessings, and your presence itself made us wonderful. It's an ornament that you people's presence made us so proud of you. Thank you so much. Very good afternoon. And as we said that you are अमरजीत सिंह हमारे कहते हैं, अमर साहब, वो हमारे अमर साहब की वो हमने एज वाली बात मत दिलाई है। तो हम तो दीर्घायु वाले और हितायु वाले लोग हैं। हम तो केवल इतना कहेंगे, आप हमारे सीनियर्स हैं। और सीनियर का अभिप्राय ये है कि हम आपको सीनियर, SEENEAR, हम आपको पास में देख क्या पा रहे हैं, बात, इसलिए आप क्या हमारे बात। सीनियर, बहुत खूब, आप बहुत खूब। हमारे सीनियर हैं क्योंकि हम आपको पास से देख रहे हैं। 4 इंच की भी दूरी नहीं है हमारे मोबाइल और आंखों के बीच में। तो ऐसे सीनियर्स का अगर हमें आशीर्वाद इतने रात, हमारे भारत के IST टाइम तो 11:20 हो रहा है। तो रियली हम वी आर फॉर्चुनेट इनफ दिस आयुष समृद्धि प्लेटफॉर्म एज वेल एज द आवर IRES, वी आर रियली thrilled with the joy and your presence made the day. थैंक यू सो मच। मैं सैकत जी का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो मेरे रेगुलर NRI है। हमारी बैठकों में रहते हैं। आज थोड़ा इंडिस्पोज थे, हम उनके जल्दी स्वास्थ्य की ठीक होने की कामना करते हैं और आप सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। शतोत्तर आयु हो, +100 हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म भी उसी गति से चलता रहेगा आपके आशीर्वाद के बल पर। और भारत सरकार से आपकी जो अपेक्षाएं हैं बिल्कुल सही है, मेरी भी यही भावना है। हमने प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो किसी के बस के बाहर हो। वो सब लोग सब कर सकते हैं, बहुत समझदार है। आज उनके पास विश्व का सपोर्ट है। भारत सरकार, भारत में तो है ही है,
भारत के जन जन जहाँ कहीं, कितने अहमदाबाद के और सब जगह के लोग उनको लोक नृत्य, लोक संगीत तो सब कुछ सिखाते, खिलाते, दिखाते हैं, मस्त कर देते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा सा अपने संदेश भारत सरकार को चाहिए, वो तो एक व्यक्ति है, भारत सरकार को भी निश्चित रूप से हम सबको सपोर्ट, ये हमारे अजीत उन सर सब कुछ भाई बोलना बंधुओं को चाहते हैं? चाहिए जो देश के बाहर है। बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार। अजीत सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, अजीत डॉक्टर सर ने शर्मा जी, माइक ऑन किया। Dr. Sharma ji, can I just जी सर। speak 1 minute, please? अरे आपका मंच है, कोई जल्दी नहीं है हमें सर। हाँ जी, जय so हो। मैं ना रिक्वेस्ट करनी सी है ना अपने all the wonderful panel who's here, Professor Agnihotri ji, Dr. Ajit Singh ji is here also. Together with the all party parliamentary group on Indian traditional sciences, from here in London, together with this with this wonderful platform, at some stage, maybe in March or April, can we have one program so we have one representative from each country, like Amit ji is here, yeah, and like our other dear friend Sharma ji was there from Holland. Can we have one speaker, not talking about how successful he is or how successful not she is, and what medications should not be here, what India is not doing right, what India is doing. Not talk about that, but just talk about, we give them 3 minutes, 4 minutes each of every country in the world to talk about Ayurveda in Slovenia, Ayurveda in Netherlands, Ayurveda in the United States. So they do their fact finding. So they don't just come and say, "Yeah, hamari practice hai, and this is my turnover, and this is what I'm doing." So this actually becomes a lot more formal, and it becomes so we can use this program for policy making issues. And so we have the screen will be littered, from all the 190 countries or whatever we can get, 100 countries, 40 countries, 50 countries. So there are individual speakers on Ayurveda talking about the welfare and the position of Ayurveda in their country. And even if it takes if we can't do it in one kisht, we can have maybe 2 or 3 serials like that. But that would be my humble request, in March, April, let's try and aim for this. And in the meantime, let's do some groundwork. So how we are going to organize that. So that's my humble I fully request. endorse Amarjit ji's this suggestion. This is wonderful. Great. Thank you, Can I Dr. say a quick thing that I'm the president of American Association of Ayurvedic Professionals. So from the bottom of my heart, I would like to invite all of you to join our association. We are offering a free membership for this year. So please check out our website, AYUSA.com. I'll put that website on our chat here too. So I really request you all to join our association, American Association of Ayurvedic Professionals, USA.com. So that'll be awesome. And we're offering free membership for this whole year, 2025. Only for 1 year. अच्छा है क्या आप यूएसए है, आप दिल्ली नहीं है। जय हो। Yeah, so this is a डॉक्टर good सीपी idea. शर्मा जी हो कंफर्टेबल है सकता है क्या? आप शब्द इतना प्यारा है कि आपके लिए आप कहना पड़ता है, इसलिए आप शब्द को आपने सही उपयोग किया, आपको बिल्कुल। अपना के आपने आपको अपनाया तो आपने सब आपको अपना लिया, Thank सभी you. सभी अपने सभी आत्मीय जन हो गए। My son is there in Virginia. Before अच्छा। there he was there in New Jersey. He did his अच्छा। MS there in New York University. So I see. so I was just going through your details that you are thrice presidents Yes. of different associations. So Really, now you are that doing a great job. And you are coming from Kurukshetra. no,